Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss about job analysis, and it is in our subject talent management and code is HR01. So now we will discuss in today's lecture that what is job analysis. What is job analysis? आपने पहले भी HR में ये पढ़ा है कि what is job analysis, but as you have taken the specialization as HR, we will discuss it in detail. So let's move on our topic. So HR analysis is the process of studying and collecting information related to the operations and responsibilities of a specific job, according to K. Ashwatthama. So job analysis क्या है? Job analysis is a process of studying and collecting information. एक वो प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. एक पर्टिकुलर जॉब में क्या वर्क होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड है. ये जब हम इन सभी चीजों की डिटेल में बात करते हैं तो इट इज कम ऑल अंडर जॉब एनालिसिस. सो इन ब्रीफ, right person for the right job at the right time and in a right place. This is in brief what the job analysis do in an organization. So job analysis is a systematic exploration, study and recording the responsibilities, duties, skills, accountabilities, work environment and ability requirements of a specific job. एक पर्टिकुलर जॉब की पूरी डिटेल है. ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी एंड रिकॉर्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब, देन ड्यूटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, accountabilities means who do or get their work done and who will report to whom regarding their work, and work environment and ability requirements of specific job. It also involves determining the relative importance of the duties, responsibilities and physical and emotional skills for a given job. साथ ही साथ इसमें और क्या आता है, determining the relative importance of the duties. जो भी ड्यूटीज आपको असाइन है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से हमें कंप्लीट करनी है, ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस में आएंगी. All these factors identify what a job demands and what an employee must possess to perform a job and what an employee must possess to perform a job productively. तो डायरेक्टली अगर हम कहें तो जॉब एनालिसिस पूरा एक कंप्लीट डेफिनेशन है जिसमें हम ये बताते हैं कि पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए और वर्क को प्रोडक्टिवली करने के लिए जॉब करने वाले एम्प्लॉयज में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो द प्रोसेस of job analysis involves in-depth investigation in order to control the output, that is, get the job performed successfully. The process helps in finding out what a particular department requires and what a prospective worker needs to deliver. ये जॉब एनालिसिस प्रोसेस से ये भी पता चलता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में किस चीज की रिक्वायरमेंट है और पर्टिकुलर वर्कर उस चीज को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए. It also helps in determining particulars about a job, including job title, job location, job summary, duties involved, working conditions, possible hazards and machines, tools, equipments and materials to be used by the existing or potential employee. तो job analysis in brief, हमें जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों की ही बात करनी है. तो आगे हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं जॉब एनालिसिस के. नेक्स्ट इज, सो व्हाट इज जॉब एनालिसिस? It is a systematic analysis of each job for the purpose of collecting information as to what the job holder does, under what circumstances it is performed and qualifications are required for doing the job. तो एक systematic analysis है जिसमें हम पूरी detailed information या detailed study करते हैं about a job और उस job को complete करने के लिए particularly एक किस तरीके का skills employee चाहिए, उसकी क्या qualifications चाहिए, इन सब चीजों की बात हम job analysis में करते हैं.
Next definition, it is according to Edwin Flippo. Job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibilities of a specific job. So this definition is according to Edwin Flippo. So now we will move to uses of job analysis. So what are the main uses of job analysis? Why we are using this concept? It's used in HRP, that is human resource planning, used in recruitment process, used in selection of a personnel, training and development process, organization audit में use होता है. Next, used in job evaluation, job design, also used in performance appraisal, career planning, safety and health. So job analysis almost HRP या organization की सभी functions में involved है और ये सभी जगह almost use किया जाता है. Nature of job analysis. So job analysis is divided into three parts under nature of job analysis. It is job tasks, job duties and job responsibilities. So job tasks, job duties and job responsibilities are the nature of job analysis. की job task क्या है, उसके अंदर duties क्या है and responsibilities क्या है, हमें किस तरीके से उन्हें fulfill करना है. Next, this is the purpose of job analysis. Purpose of job analysis is recruiting and selecting, creating a right fit between job and candidate, recruitment and selection. Performance analysis. Performance analysis is indirectly performance appraisal where we are evaluating the performance of an employee. Next, compensation management, training and development needs analysis, and job designing and redesigning, enrichment and enlargement. So these all comes under the purpose of job analysis. Next is steps, stages of process or procedure in job analysis. So what steps will come under job analysis? First one is collection of background information. We have to collect information regarding particular job. So first step is collection of background information. Then selection of representative job to be analyzed. हम उस जॉब का सिलेक्शन करें जो जॉब हमें रिप्रेजेंट करनी है और उसे प्रॉपर्ली एनालाइज करें. नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा. जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना एंड जॉब डिस्क्रिप्शन. इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज डेवलपिंग जॉब स्पेसिफिकेशन. सो दीज 5 steps are under stages of job evaluation. So now we will move to the techniques. What kind of techniques we used in job analysis or collecting a data? It is personal observation, sending out questionnaires, maintenance of log records, conducting personal interviews. So these all come under techniques of data collection for job analysis. Next is components of job analysis. So job analysis are divided into two parts. It has two components. One is job description and other one is job specification. Job description is JD and job analysis में job description and job specification में क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे job description. So job description means brief summary regarding a particular job. Like job title क्या है, working hours क्या रहेंगे उस job की, duties and responsibilities क्या रहेंगे उस particular job या profile का, इसके बाद working conditions क्या है और salaries या incentives क्या रहेंगे. Next is job specification. Job specification में क्या आएगा? It is regarding a particular employee or individual who is performing a particular job. ये उस individual employee के regarding है सब चीजें job specification में जो उस job को करेगा. इसमें क्या आएगा? एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशंस, क्वालिटीज, एक्सपीरियंस, हिज और हर फैमिली बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग. दिस ऑल विल कम अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन. सो इन जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज अ brief summary regarding a job or a profile, and in job specification it is regarding a brief summary of a particular employee who will do that task. So job description क्या है? The preparation of job description is necessary before a vacancy is advertised. Job description पहले ही बन जाता है जब अब वैकेंसी की रिक्वायरमेंट हो, उससे पहले ही जेडी प्रिपेयर्ड होता है क्योंकि ये वर्क के अकॉर्डिंग है कि क्या जॉब है, क्या प्रोफाइल है और उसमें किस तरीके से वर्क होगा.
ऑफ जॉब, जॉब किस तरीके की है उसके ब्रीफ में बताता है ये उसके बारे में. इन अदर वर्ड्स एम्फसाइजेस द जॉब रिक्वायरमेंट्स, जॉब की रियल रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके बारे में ब्रीफ समरी है. तो जेडी क्या है, इट इज रिगार्डिंग द जॉब, जॉब के बारे में ब्रीफ समरी. तो एडविन फ्रिको ने जेडी को डिफाइन किया है. जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. उन्होंने कहा एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है जिसके अंदर ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज मेंशन होती हैं ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब. इट शुड टेल व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज डन एंड व्हाई. इसमें क्लियर होता है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और किस टाइम तक हमें कंप्लीट करना है. ये सारी चीजें जॉब के लिए रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स होती है. Then details given in job description. Job description में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं अभी मैंने आपको पहले भी बताया. जॉब टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन ऑफ द जॉब, सुपरविजन गिवन एंड रिसीव्ड, मटेरियल्स, टूल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट वर्क्ड विद, डेजिग्नेशन ऑफ द इमीडिएट सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट सैलरी लेवल्स, सैलरीज, अलाउंसेस, ये सारी चीजें उनको क्या क्या मिलेगा अदर देन बेसिक सैलरी, ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी. और क्या डिटेल्स होगी, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू डेली, वीकली, मंथली एंड कैजुअल, एस्टिमेटेड टाइम टू बी स्पेंट ऑन ईच ड्यूटी. तो एक कंप्लीटली ड्यूटी चार्ट रहेगा जिसमें वीकली, डेली, मंथली आपको किस तरीके से वर्क परफॉर्म करना है और इस वर्क को करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है. Definition of unusual terms, conditions of work, conditions of work में लोकेशन क्या रहेगी, वर्क की टाइम क्या रहेगा, स्पीड ऑफ वर्क क्या होगा, एक्यूरेसी, हेल्थ हैजर्ड्स, एक्सीडेंट्स, हैजर्ड्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें कंपनीज उन्हें अदर देन बेनिफिट्स देती हैं. अब वो जिस भी तरीके की जॉब करेंगे उसके रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज एंड प्रमोशनल चांसेस एंड चैनल्स. सो दिस ऑल कम अंडर जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन फिर से बताऊं तो एक ब्रीफ समरी है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब की ब्रीफ समरी होगी जॉब डिस्क्रिप्शन. नाउ वी विल मूव टू जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन. इट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस, ट्रेड्स, फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल मस्ट possess to perform the job duties and discharge responsibilities effectively. Job description, it is a brief summary regarding a person who is performing a particular job. तो उस एम्प्लॉई या उस पर्सन के बारे में सारी चीजें होंगी. यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट होगी कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या स्पेशल ट्रेड्स हैं, क्या फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो उस जॉब को परफॉर्म करेंगे. सो एडविन फ्रिको ने डिफाइन किया है जॉब स्पेसिफिकेशन को. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब प्रॉपर्ली. तो मिनिमम एक पर्सन में कि ये सपोज क्वालिटीज हमें चाहिए ही चाहिए पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन. सो व्हाट कवर्स अंडर जॉब स्पेसिफिकेशन, व्हाट कवर्स इट इज फर्स्ट इज एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देन स्किल्स, इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फिजिकल फिटनेस, सोशल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, intelligence, judgment and initiative required for performing the job. So this is all under job specification. So job specification is a brief summary regarding a person or an individual who is performing a particular job. उसी का पूरा फैमिली बैकग्राउंड, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशनल या एकेडमिक बैकग्राउंड, इस तरीके की ब्रीफ डिटेल्स होती है उस इंडिविजुअल पर्सन की. नेक्स्ट जॉब एनालिसिस में एडवांटेजेस पे आ जाते हैं हम जॉब एनालिसिस की. इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, असिस्ट इन डिजाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म अ जॉब. जैसे डिजाइनिंग कैसे होगी, जॉब डिजाइन करता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इसके थ्रू सब डिजाइनिंग है कि हमें जॉब में क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से जॉब परफॉर्म करनी है. हायरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, हेल्प इन परफॉर्मिंग इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल प्रोसेसेस, इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करता है जॉब एनालिसिस. असिस्ट इन डिलीवरिंग एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, जहां पर जिस भी तरीके की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है उसके लिए हेल्प करता है. देन असिस्ट इन डिसाइडिंग कॉम्पनसेशन पैकेज फॉर अ स्पेसिफिक जॉब. एक पर्टिकुलर जॉब का क्या कॉम्पनसेशन पैकेज होगा, क्या सैलरी या इंसेंटिव उसको दिए जाएंगे, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर आएंगी.
And what are the disadvantages of job analysis? Subjective matters, lengthy projects हो जाते हैं, lots of human efforts required है, source of data is extremely small, unqualified job analyst अगर unqualified है तो job analysis proper नहीं हो सकता, then mental abilities cannot be directly observed. So this all comes under advantages and disadvantages of job analysis. So this is all regarding job analysis. आपकी second unit में job analysis में यूनिट में एक जगह जॉब एनालिसिस को दे रखा है, फिर उसके बाद अलग से पॉइंट दे रखा है रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. तो मैंने ये पूरा जॉब एनालिसिस में कवर किया है. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी. सो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज ऑल